right? So I believe we have tried our levels best, to cover almost everything possible in terms of the nutrition and exercise science. I have the understanding that थोड़ा फार bouncer भी गया है, right? Because this was the first time, and we were also like doing this thing for the first time in the time frame of 3 to 4 hours. We have tried कि पूरा syllabus cover करना है. Maybe now we have the realization next time we'll plan it for 4 hours directly, so that everyone will get some adequate time and you will be mentally prepared कि हाँ 4 घंटे इधर ही बैठना है, right? So it was 50 minutes almost excess. Now we will take a break for another 5 minutes only, okay? Because we have some time restrictions and we have to wrap everything by 3, right, Suresh? So we'll be Yes. back in 5 minutes, and you will be, added into the respective breakout rooms. And in the breakout rooms, in one breakout room, I'll be there along with me. I will be having my nutritionist department, and in one breakout room, Tejas will be leading, and Madhuri as well, and Niharika as well. So whatever queries you have, from customized supplementation to everything that we have covered so far, you can ask for the queries. We'll try to resolve that. And of course, if you want a very customized assistance in terms of nutrition planning, workout planning, of course there are a lot of aspects to that, format and techniques and everything. So you can actually go for our online services or offline services as well, where we will dedicatedly provide you a coach and a nutritionist who is going to track everything and who is going to teach you everything in very depth about the program, inclusive of the practicals, of course, right? So thank you so much. So Suresh, in 5 minutes, okay? So put everyone in the breakout room so we can start with the questions and answers, okay? Sure, so sure. So much, everyone. Yeah, see you. Okay. Don't please disconnect the call. Okay, be in the call. Okay, and I'll just distribute everyone in the two breakout rooms. All right. See you in 5 minutes.
So yes, Prithvi is here, so we can continue with the answer. Yeah. Yeah. So we're talking about gut health. Okay. So gut health के केस में like gut health hamper हुआ है, ये आपको क्यों लग रहा है? पहली चीज तो what is gut health for you and how it is hampered? So what are the parameters? Do you like feel bloated, or it's a case of diarrhea, or severe like stomach pain? How is it exactly? So there are some digestion issues, Okay. और bloated भी feel होता है कई बार. Mm-hmm. ओके, सो इन दैट केस सी पहली चीज तो आपको फिक्स करनी पड़ेगी, दैट इज योर वाटर इनटेक। ठीक है, सो आई डोंट नो हाउ मच वाटर इनटेक यू यूजुअली हैव, बट कंसिडर हैविंग 3 to 4 liters ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट हम्म. थिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम गट हेल्थ के लिए बहुत सिंपल सिंपल फिक्सेशंस रिक्वायर्ड है, बट वी जनरली विल बी फोकस्ड टुवर्ड्स समथिंग एल्स ओनली। सो गट हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड फिक्स योर वाटर लेवल्स। वाटर के साथ, बिकॉज बॉडी से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जाना चाहिए वो जनरली पास नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन कि वहां पे गट हेल्थ के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो वाटर Okay. इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। उसके साथ स्टूल फॉर्मेशन के लिए सोडियम रिक्वायर्ड रहता है, सोडियम एज इन अपना नॉर्मल सॉल्ट। सो जो भी आप 3 liters वाटर कंज्यूम करते हो, आउट ऑफ दैट यू कैन कंसिडर 1 liter, यू कैन ऐड लाइक सॉल्ट ऐड करके आप वाटर ले सकते हो, राइट? सो हम्म. 10 to 15 grams in 1 liter. So that will be a thing for good for your gut health. And Okay. VSL3, अगर इसके बाद भी अगर the issue is still there, then you can directly go for VSL3 जो आपने डोज और कोर्स किया है, that is for a very short duration. अभी क्या हम्म. होता है, based on how much is the gut health is damaged, VSL3 का डोज डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे अगर अच्छा. आपने बोला कि 7 days किया और कुछ नहीं हुआ, राइट? हम्म. ऐसा नहीं है कि आगे कंटिन्यू करने के बाद नहीं होगा। 7 days में इंक्रीज द डोज, माइट बी यू माइट हैव 1 capsule per day, राइट? सो हम्म. हैव 2 capsules for 7 days, and pre meals, let's say pre breakfast and pre dinner, have one capsule of VSL3, and like follow this for 7 days. Look at the results. Post that, if you feel this is working, right, then हम्म. start doing it for another 7 days. So VSL3 is the thing, 2 capsules per day. You can easily take it for a month's time. Okay. And post that, you can go on the maintenance dose of 1 capsule per day. So it is not the thing that you have to end it in, like if you have a chronic gut issues, you cannot end it in 7 days. 7 days में लेट्स से लाइक किसी को अचानक से डायरिया हो जाता है, राइट? इन हम्म. दो 7 days इज 7 days का डोज इज इनफ, बट नॉट इन द केस ऑफ chronic gut health. ओके, Okay. हम्म. गट हेल्थ बहुत सारी चीजों की वजह से खराब होता है। फर्स्ट तो मैंने बोला वाटर का इंटेक, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, एंड मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज गट हेल्थ के पीछे आपके बैक्टीरियाज। तो गट में बैक्टीरियाज का डेवलपमेंट चाहिए, गुड बैक्टीरियाज का, तब जाके द इशू विल बी रिजॉल्व कंप्लीटली। एंड इनफैक्ट नॉट बैक्टीरियाज, बैक्टीरियल कॉलोनीज शुड बी देयर। सो लेट्स से कि आप बैक्टीरियाज बढ़ाने के लिए जनरली कर्ड कंज्यूम करते हो। कर्ड Correct. से जितना बैक्टीरिया मिलता है ना, लाइक लेट्स से 5-6 किलो कर्ड खाने के बाद, उतना हम्म. बैक्टीरिया गेट इट फ्रॉम 1 capsule ऑफ VSL3, राइट? अच्छा. तो हम्म. देयर शुड बी बैक्टीरियल कॉलोनीज, बिकॉज बैक्टीरिया जब गट में जाते दे स्टार्ट डाइंग एज वेल। अगर 1,000 हम्म. बैक्टीरिया जाते तो 300-400 तो दे विल डाई। So you have to make sure you will be building the bacterial colonies over the time, and once the colonies are developed in your gut, then वहां पे उनका reproduction will be the easy thing. Then they will start replicating on their own. Okay, so वो bacterial colonies build होने तक you have to wait. So accordingly doses vary होते हैं। ठीक है, अच्छा. but it will हम्म. be good if you can get this thing very customized, so that team will look into the factors and they can guide you more on this, right? Right. Yeah. So Okay. yeah, thank you. So the next question, please. Thank you. Thank you, Prithvi. सर शैलेश बाबू भैया, Yeah, hi Vaibhav. आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। Mm-hmm. हेलो, एम आई Yes, ऑडिबल? yes, yes, you're audible. Yeah. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, पर क्या हो रहा है अभी, जैसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ पर रेगुलर हो नहीं पाता है। मेरा जो वर्क पैटर्न है, मेरा जो काम है वो काफी सिटी टू सिटी वेरी करता है, तो मुझे काफी घूमना पड़ता है।
तो राइट। काफी टाइम क्या होता है कि अगर मैं लेट से मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, 2 दिन अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उसके बाद में मैं फिर से दूसरे सिटी ट्रैवल करना पड़ता है मुझे। ओके। तो उधर से हाँ, आने के बाद में या फिर वहां पे पहुंचने के बाद में भी काफी थकान होती है। 12 12 15 15 घंटे का ट्रैवल होता है मेरा। तो अंडरस्टूड। हाँ, तो अगर मैं थका हुआ हूँ तो ऐसे कंडीशन में मुझे वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर वर्कआउट नहीं किया तो फिर मेरा डायरेक्ट 15 15 20 20 दिन का गैप, कंटिन्यू गैप हो जाता है। राइट, अंडरस्टूड। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज ना, सो आपको एक्सेस रहता है जिम का सब जगह जहाँ पे आप ट्रैवल करते हो? सब जगह तो नहीं है, 2 3 जगह ही है ऐसे। सो लेट्स से कि आपका वर्क का एक दिन तो ऑफ होगा, राइट? आराम से वन डे विल बी द हाँ। ऑफ डे, वन डे हम्म। दैट डे, एंड फाइंड आउट टू मोर ऑल्टरनेटिव डेज, राइट? जैसे हम्म। लेट्स से संडे इज योर ऑफ डे फॉर द वर्क, तो संडे यू विल बी वर्किंग आउट फॉर श्योर, राइट? हम्म। Then let's take the example of, let's say, Wednesday and again Friday. So that will be the in between activity. So Sunday, then Wednesday, and then Friday. So you can aim for the weight training days. Okay, those ओके। days should be weight training days. And before starting of the workout, even if you feel there are no energy levels left, in that case you can just go for a very strong dose of caffeine. Black coffee helps ओके। a lot of times. Okay, and once you take that and once you start working out, everything else will happen. Okay, that is one thing. And in between the days, even if you have the access of gym or you don't have the access of the gym, you can just go for normal jogs and walks. Even ओके। आप अगर लिटरली हार्ट रेट मॉनिटर करके भी अगर कार्डियो नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाएगा। वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, उसके बाद ये भी कर रहे हो, एंड वो भी कर रहे हो, राइट? या फिर जो वेट ट्रेनिंग के डेज है उसी के फॉलोड बाय 20 मिनट्स का कार्डियो कर लो, बट दैट विल बी अगेन अ टास्क। सो वो 20 डेज यू कैन शिफ्ट इन बिटवीन। संडे को वेट ट्रेनिंग, मंडे को यू कैन गो फॉर द कार्डियो, देन अगेन ट्यूसडे को वेट ट्रेनिंग, लाइक दैट। अगर इससे भी अगर आपको लगता है कि लाइक लेट्स फॉलो दिस रिज्यूम फॉर अ मंथ्स टाइम, इफ यू फील कि इसके बाद भी आई एम नॉट एबल टू डू द वर्कआउट्स वेरी रिलीजियसली बिकॉज आई एम वेरी लो ऑन एनर्जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, योर न्यूट्रिशन, फिक्स योर न्यूट्रिशन। सेकंड ओके। थिंग, ट्राई द HIIT मॉडल्स। ओके, HIIT में क्या होता है? On the same day you are going to train muscles and you are going to train your, like, there will be the circuits design, circuit workouts. Okay, so ओके। circuit workouts में you'll train your like muscles, you'll train your cardiovascular endurance as well, and flexibility वगैरह वो चीजें तो constant ही है, right? So एक सेम डे में? सेम डे में HIIT वर्कआउट्स आप एक बार सर्च करोगे ना, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट HIIT और सर्किट वर्कआउट्स। सर्किट ओके। वर्कआउट्स में यू विल डू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल, यू विल डू द, वहां पे सर्किट डिजाइन किए रहते हैं, जैसे बॉल स्मैश किया, ठीक है, हाँ हाँ उसके हाँ। लिए 10 पुशअप्स कर दिए फॉर एग्जांपल। करेक्ट। सेम गोज विद द वेट ट्रेनिंग एज वेल। सो आप वैसा कोई एक सर्किट उठा के वीक में 3 से 4 बार कर सकते हो, बट ओके। वहां पे थोड़ा लिमिटेशन है। लेट्स से कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करते हो हमेशा एंड कार्डियो ट्रेनिंग भी सेपरेटली करते हो, तो लेट्स से कि इफ यू आर अर्निंग 100 यूनिट्स ऑफ स्ट्रेंथ, वहां पे 100 यूनिट्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होंगे, बट इट्स ऑलवेज लाइक यू आर डूइंग समथिंग, राइट? इट्स लाइक कुछ भी ना करने से बेटर तो कुछ कर रहे हो, राइट? सो इट इज अ बेटर वर्जन अगर आप टारगेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर बाय द लाइक पहला वाला ऑप्शन तो आपके पास है ही, वेट ट्रेनिंग 3 दिन कैसे भी लाइक थोड़ा सा मैनेज करो, कार्डियो को थोड़ा लो कर दो, दैट वे यू ऑल्सो यू कैन मैनेज दिस थिंग। ओके। थैंक यू, थैंक यू, मैं ओके, ट्राई करता हूँ ये। यस, आप ट्राई करो एंड फर्स्ट फिक्स योर न्यूट्रिशन एंड स्लीप, बिकॉज अगर वो दो पैरामीटर्स फिक्स्ड है, आपको अगर इनफ न्यूट्रिएंट्स आ रहे ना, सो स्टिल यू विल गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी थ्रू दैट, एंड आप इजीली वर्कआउट्स भी कर सकते हो, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैपेंस, अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि आपके लोअर डेज पे भी आपका लोअर जब लाइक लेट्स से कि यू आर नॉट फीलिंग दैट एनर्जेटिक, स्टिल वेट लिफ्टिंग या फिर वर्कआउट्स काफी हद तक साइकोलॉजिकल फैक्ट है rather than just the physical thing, right? Because अगर आप साइकोलॉजिकली बहुत रेज में हो, लेट्स से, या फिर बहुत गुस्सा है, समथिंग लाइक दैट, सो यू विल हाँ। लिफ्ट एनी वेट्स। सो दिस ओके। इज इट वर्क्स, गुस्से में होकर के बैठते हो ना, लाइक दैट इट इज अबाउट द मोटिवेशन। सो बिफोर अ वर्कआउट, consider it as a meditative starting of the workout. You can just grab a cup of coffee and you can just sit and you can just think about your workout. So that also helps a lot of time to generate that kind of energy, and you will just do the blasting, like when you start to lifting. So that also happens, that also helps a lot of times. But for that, ओके।
you have to consider in which vertical you are working out, health, fitness and performance. जब आप परफॉर्मेंस लेवल पे जाके कोई भी एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हो, तो ये हम्म चीजें बहुत मैंडेटरी है. परफॉर्मेंस में यू विल नॉट लाइक कि मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा है, वहां पे होता है मेरा हम्म परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है. क्योंकि आपको पता हम्म है कि मंडे मैंने ट्रैवल कर लिया है, मेरा ट्यूसडे या फिर वेनेसडे में मेरे स्क्वाट्स है, आई हैव टू गो वेरी हेवी ऑन द स्क्वाट्स. सो अगर वो करेक्ट। करना है तो यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड ओनली. ट्रैवल करते हाँ समय यू विल बी कॉशियस कि हाँ ट्रैवल कर रहा हूँ बट आई हैव टू रिजर्व माई एनर्जी फॉर द स्क्वाट्स. सो वो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. आप कौन से कैटेगरी में हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बिकॉज नहीं, मेरा वही क्वेश्चन था एक्चुअली कि अगर लेट्स से अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और थकान अगर है तो, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि अगर मैं ट्रैवल से अगर आ रहा हूँ कहीं से तो मैं वो टाइम पे वर्कआउट स्किप ही कर रहा था डायरेक्ट. तो अभी राइट मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम वर्कआउट जाऊँ, यानी जिम जाऊँ और कम से कम मेरा वर्कआउट हो जाए वहां पे. राइट, वो थोड़ा सा पुश हम्म, करना पड़ता है वहां पे जाके. हम्म, आपको खुद को रियलाइज होता है मेनी टाइम्स कि नहीं, आई कैन हम्म, डू दिस वेरी इजीली. मे बी ओके. जहाँ पे 4 सेट करने, परफॉर्म 2 मेन सेट्स, टू हम्म, लाइक पैरेलल लाइक वार्म अप सेट्स, राइट. सो हम्म, 4 की जगह 2 सेट्स करो, बट गो फॉर दैट. सो जहाँ पे ओके. वर्कआउट का ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स के अंदर आ जाएगा ना, यू विल फील कि अरे हाँ ये दिस इज मैनेजेबल. देन धीरे धीरे ओके. करके एक एक सेट बढ़ाओ, या फिर कभी छुट्टी आ जाएगी या फिर कभी यू आर नॉट ट्रैवलिंग, ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे, देन इंक्रीज योर वर्कलोड एंड इंटेंसिटी. Right, so you can plan accordingly. It's always good to, it's always better to do rather than doing nothing. ओके, और इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है मेरा, इफ आई Yeah. कैन आस्क. तो जैसे मेरा ट्रैवलिंग, मैंने बताया आपको कि मेरा ट्रैवलिंग काफी है और मैं चाहता हूँ कि मेरा रिलीजियसली न्यूट्रिशन मैं फॉलो करूँ, मैं डाइट फॉलो करूँ, डाइट प्लान. पर Mm-hmm. क्या होता है अगर मैं बाहर अगर कहीं पे जा रहा हूँ, ये हो रहा है तो मेरा, मैं ऐसे जगह पे होता हूँ कभी कभी कि मैं चाह कर भी, अगर मैं टिफिन भी ये कर रहा हूँ तो मैं यानी दो दो दिन कंटिन्यू वहां पे होता हूँ, तो मैं वहां पे कंटिन्यू डाइट फॉलो नहीं कर पाता हूँ. ऐसे कंडीशन में मैंने क्या करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी स्लीप और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है. ओके, सो इजी केस है कि आप कहीं पे भी रहो, आपको खाना वहां पे कुछ ना कुछ अवेलेबल रहता है. हाँ, कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, राइस अवेलेबल रहता है सब जगह, राइट. हम्म, सो हम्म, ऑलवेज इन दैट केस यू ऑप्ट फॉर द फर्स्ट क्लास क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन सोर्सेज. अगर आपको वो एग्स भी नहीं मिल रहा है वहां पे, मीट भी नहीं मिल रहा है, या फिर पनीर भी नहीं मिल रहा है, इन दैट केसेस यू कैन कैरी वे सप्लीमेंट. इन एवरी हम्म, यू कैन हैव 1 scoop of whey followed by a portion of rice, sorted. Portion of rice should not be in kgs, that should be in the grams. Okay, 100 200 grams each size. And जहां जहां पे पॉसिबल हो रहा है कि जहां पे मीट है या फिर एनी ऑफ द फर्स्ट क्लास क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन जो हमने प्रीवियसली मेंशन किया है, उसमें से हम्म, जो भी सोर्स मिल रहा है यू कैन ग्रैब दैट. इनफैक्ट ओके. while traveling, actually, this like following this kind of diets is a very easy task. Because घर पर हम्म, जब आप बनाकर खाते हो ना, आज लेट्स से हम्म, आज बनाया पनीर भुर्जी, कल भी बनता है हम्म, पनीर भुर्जी, आज अंडा हम्म, भुर्जी, कल बॉइल्ड एग. दिस इज हम्म, हाउ यू कुक. Bahar, you will करेक्ट. get a lot of recipes for protein. So just करेक्ट. grab a good recipe. Don't go हम्म, for something like, Chinese recipes. Go for some kebabs, paneer हम्म, kebabs, chicken kebabs, mutton kebabs, fish kebabs, platters. You can grab that. So उससे कुछ भी affect नहीं होगा आपके health के ऊपर, right? ओके, ओके. And along with that, rice तो सब जगह मिल जाता है. Rice I don't think कि कहीं पे नहीं हाँ, मिलता है, right? So you राइस तो can मिल ही follow जाता है. it religiously and easily. एंड जहां पे प्रोटीन का ऑप्शन पता है कि अभी कुछ नहीं है इधर, carry protein shakes. ओके, Simple. Yeah. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Yeah. The next question, please. Can I go for the next question? Yeah, yeah, sure. So, I kind of know how to eat, and what Niharika said, that include protein, one carb. I eat like that, but I've been working out, maybe not as consistently as I used to with a PT at WildFit, but I've been working out, and I have not seen any progress since I left WildFit. So I think somewhere the fat is playing a role where, because otherwise I'm maintaining my diet. So should I be quantifying fats? Because right now, so in my mind, Quantity of the fats you are saying? The fats that you yeah, are eating? Okay. yeah. Okay. So, So right now, what I'm doing is like ghee is good, so I'm using ghee. Olive oil is good, so I'm using olive oil, but I'm not measuring it, and probably, yeah, understood. So, see, this happens like this is a very good question. So, the measurements are very simple. I'll try to make it very simple. Like, let's say if you are on a carbohydrate-based diet, if you are having rice, like roti or something like that as a source of carb,
keep the fats restricted for the cooking medium. Let's say one portion size, like if you are making it sabzi for you, right? So for making sabzi, like let's say you will eat like 100 or 150 grams of sabzi, right? So for every person, you can consider 1 tablespoon of ghee for making, right? So if you eat 15 ml, let's say 15 ml, 15 gram ghee per meal, still you will end up eating maximum 50 to 60 grams of fat in a day. So that is absolutely fine. Just don't overuse it. So I, like nowadays 15 gram per person is more than enough. If you are adding 1 tablespoon for making any kind of recipes, that will not stick to the pan, or the every purpose will be solved, like that will taste good. So that is how you quantify it. So fat का quantification is very easy. Just keep it restricted to the cooking mediums जहाँ पे possible है. जैसे अभी eggs बना रहे हो, eggs में you can go fat free, because eggs में as it is you have the combination of fats and protein. So you can go fat free cooking, like completely आप उसको fry करो, जो करना है करो, like जो पैंस आते हैं नॉन स्टिक की पैंस, यू कैन यूज दैट, कि जहाँ पे एकदम लो ग्रेड आपको फैट यूज करना पड़ेगा. सो यू कैन कट आउट द फैट्स फ्रॉम देयर, सो इट विल बी वेरी इजीली मैनेजेबल. एंड इवन इफ यू एड इट इन ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मोस्टली 4 मील्स रहते हैं. In all the 4 meals, even if you add 15 15 15, still it will not exceed more than 50 60 grams per day. And Okay, that's enough quantity, yeah. And regarding the that makes sense. workout progression, again, most of the times you will restrict yourself. You can. So I remember the strength graph that you have shown at the Banner Center, right? So वहां पे आपका स्ट्रेंथ काफी गेन हो रहा था, बट बाद में अगर आपने उसको वर्कआउट में कुछ चेंजेस किए, ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कंसिडर वर्कआउट शुड बी प्रोग्रेसिव. Okay, so we actually need to look into the depth of that. Of course, that fat wala factor might be there, but a lot of factors can involve here, right? Yeah, I've already spoken with Ankit that I have realized there's a need that I need more personalized Right, right. Because a lot of help. So yeah, I'm gonna reach out for that right, right. It's a already. Okay. psychological thing as well. Most of the times, that thing is also there कि मेरा coach नहीं है पीछे खड़ा, so वो automatic थोड़ा सा motivation you will drop and something like that, वो भी हो जाता है. So you can just make Okay. sure, yeah. So quantification, not to an extent of where you're counting every single calorie, but So in general, okay, that right. is not Calorie practical and yeah. counting is not very required. See, anywhere, not regarding protein, fats or carbohydrates, it will be like a very hectic task. यार वो measure करते बैठो या खाते बैठो, right? Yeah. Rather than that, quality of calorie matters a lot. Like let's say अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, या फिर कुछ भी प्रोटीन सोर्स खा रहे हो आपके डिजायर्ड सोर्सेस में, and even if you eat 100 grams extra, that is fine. 200 chicken, या फिर चिकन खाने में लिमिटेशन है. लाइक लेट्स से इफ यू आर वेरी हंग्री, ट्राई दिस एंड यू स्टार्ट ईटिंग बिरयानी, यू विल एंड अप ईटिंग 2 kg ऑफ बिरयानी आराम से. लेकिन यू स्टार्ट ईटिंग चिकन, यू विल एंड अप ईटिंग ओनली 300 grams मैक्स, आधा किलो ज्यादा से ज्यादा, नॉट मोर देन दैट, right? Yeah. So even if you eat protein sometimes in excess, it is having a lot of functions, so that functions will Okay. be satisfied. So it is not required ki every time, but you have the understanding ki yeah, mere ko like lunch, if I'm having lunch mein I need 200 grams of chicken, followed by 50 grams of rice maybe, or 100 grams, a bowl of rice, and that is enough food for me, right? So you can quantify in that aspect. It is not always required, like you should quantify the things, because that is not going to happen. Yeah. Yeah. Makes sense. And Okay. if your Thank you. your goal is very targeted, if you want to shred a lot of pounds or fat drop and all, in that case, of course, you can quantify. Then you need the customization. कि इतना ही खाना Okay. है. That's it. But Okay. for a day-to-day life, this is not required, and still you will lose body fat, because at the end of the day, you are making sure you are eating healthy and you are doing the good workouts as Yeah. well. So you are Stress going to training. lose the weight as well. Yeah. Okay. Okay. Thank you. That was Thank my you. question. Yeah. Next question, please. No questions.
This is the first time, like the reason behind, again doing this thing कि breakout rooms close कर दिए because there were no questions at all. Because generally हम जो webinars लेते हैं वहाँ पे 2 hours it goes like question and answer only. Okay. Also, my चलो, question, ओके। I'm audible. Yeah, yeah. Uh, okay. So my question is, milk is class one protein, so why should it be consumed a little less or in moderation? What thing? Milk. Milk Okay, is a so class one source yeah, of of protein. course, milk is a class one source of protein. Like I'll try to simplify this thing. Like let's say, if I need, like let's say, 20 grams of protein, okay, in my one meal, and I have to fulfill that requirement with the help of milk is the first option. I have to fulfill that requirement with the help of whey protein. That is the second thing. Okay, so अगर one 20 ग्राम्स अगर आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है वहां पे यू विल हैव टू कंज्यूम ऑलमोस्ट 2 to 3 liters ऑफ मिल्क. वहां पे 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल बाय अ स्कूप ऑफ प्रोटीन और 100 grams ऑफ चिकन और 100 grams ऑफ पनीर. That is how it works. So to just to make sure that like if you have 2 to 3 liters of milk, that is not going to digest very well. Lactose is the again the second factor that you have to take care of because that is again at the end of the day sugar that is going to excessively going to hamper in a lot of ways. And that is the reason even if it is like whey is derived from the milk only, but that lactose part will be removed and there are certain techniques that will be used. Of course you have the understanding protein kaise banta hai, and that is the reason we will go with the 20 grams के लिए maybe 100 grams of chicken या फिर 1 scoop of protein या फिर in that case 3 to 4 eggs as well. And Okay, got it. yeah, same goes with milk, curd and cheese. तीनों एक साथ कंसिडर कर सकते हो. सेम एग्जांपल है सबके लिए. ठीक है. Okay, okay. या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. तो शैलेश वैभव हियर अगेन। या हाय वैभव. शैलेश, आई डोंट नो ये रिलेटेड है या नहीं है। मेरा थोड़ा पोस्चर जो है, बैक पोस्चर, मेरा नेक और मेरा लोअर बैक जो है वो काफी दर्द करता है। वैसे मैंने दिखाया भी है कायरोप्रैक्टर्स और इन लोगों को, तो ओके. उनका, हाँ, तो मैं उसमें काफी ट्रैक्शन और ये सारी चीजें उन्होंने की है कि सर आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज के बाद में वो ठीक हो जाएगा। पर ये ऑलमोस्ट अभी 3-4 साल हो गए ये चीज कंटिन्यू होते जा रहा है अभी। तो ओके. इसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर ऐसे, मुझे नहीं पता ये रिलेटेड है या नहीं है इस Yeah, सेशन of के course, आज। we can give some suggestions for the same. So आपका भी करंट बॉडी वेट कितना है? मेरा बॉडी वेट 67-68। 7. So what do you think on the obesity level of 1 to 10 where you can mark yourself? मैंने अभी आपके यहाँ पे ये किया था, मैंने Basis. बी एम वो Your बी एम आई। body fat हाँ, percentage? तो मेरे कुछ 19 और 20 ऐसा कुछ था। Body fat percentage. So it is या on a lower end. So you are on a leaner side. That's a good thing. So if still that issue is there, so of course the first thing first that is going to help you is the flexibility and the muscle soreness वाले factors. Because जहाँ पे भी आपके बॉडी के लेट्स से आपके नेक रीजन में एंड लोअर लंबर रीजन में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है राइट, पेनफुल हाँ, एरियाज. सो यस मोस्ट यस, ऑफ द करेक्ट। टाइम्स इट हैपेंस कि वहाँ के सर्टन एरिया में ना बहुत ज्यादा स्टिफनेस बिल्ड होता है एंड उसी की वजह से पेन टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाता है. जैसे अगर आपका सिटिंग जॉब है फॉर एग्जांपल, तो इन दैट केस आल्सो दैट कैन हैपन. सो फर्स्ट ट्राई डूइंग गुड स्ट्रेचिंग मैकेनिज्म्स. यू कैन गो एंड सी अ फिजियोथेरेपिस्ट कि जहाँ पे जाके you can do the needling for that part. Of course the physiotherapist will give you more guidance on that. Second thing, you can start weightlifting. Okay, weightlifting अगर एक बार start कर देते हो तो most of weight, not only weightlifting, exercise I am talking about, starting from that mobility drills, weight training, cardio training से लेके at the end of the flexibility drills. So जब आप एक ओके cumulative करते हो ना, बहुत बार स्पाइन में कंप्रेशन फोर्सेस जाने के बाद स्पाइन एक्सपांड हो जाता है अच्छे से एंड ओके साइमल्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह ये सारी चीजें करते करते वो पेन ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाता है राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो स्पैज्म के फॉर्म में रहता है कि एक ही पोस्चर में बहुत टाइम बैठ रहे हैं या फिर अलग अलग एंगल्स में बैठ रहे हैं. दैट इज ऑल्सो द रीजन.
So you can Correct. start doing this thing, and of course your coach should be, very well with that thing, the spine and all. He should basically, a rehab therapist can help you in a good way, not physiotherapist, because rehab Mm. therapist will, do both the activities. He will plan the trainings, and he will also try to reduce the stiffness or whatever the things that are going there. He will look into the x-rays and MRIs, and he will plan the trainings accordingly, so that you can eliminate all of the pain. ओके ओके, चलेगा, Because मैं एक बार doctors and everyone are generally, they will do this thing only, ki show, like go and show physiotherapist, traction karo. But iska actually end of the day, solution is the exercise only. Exercise करते हो ना, तो that will be like a routine or the regime, and उसके बाद automatically ये pain release होना start हो जाता है, right? यस सर, Yeah. Yes. थैंक यू वेरी मच। Thank you. Yeah. Next question, please. No questions. No, in that case, maybe I can go. So, Shailesh, I have two Yeah. questions. One is workout routine. So, I can follow a 4 day schedule at max. The problem is it will be probably Thursday to Sunday or Friday, Saturday, Sunday. So, on a trot. Monday to Wednesday is little difficult. Then, what kind of schedule should I follow for Thursday to four Sunday. days on a trot? Okay. That's one. And then number two is on the nutrition front. So I stay in Thane, so wild fit is not an option. Otherwise, I would have loved to. But then, is there anything that you have, like one-to-one mentoring or some program Yeah. wherein I can have some personalized nutrition Right, right. coaching? Of course, we can go ahead with that. So the first thing is the doubt regarding your workout plan. So you will not be working out on Monday to Wednesday, right? So that is Correct. that Yeah. is all. So okay, I got your point. So Monday to Wednesday is your complete rest day. So you have only 4 days. In that case, the standard, and you are a beginner completely, right? Yeah. You have not worked out in the past, right? Very rarely on and off. Yeah. Very. So, like out of this 4 days, in the continuation, you can go for full body workouts for 3 days. Not Okay. a problem at all, right? आज आके जो फुल बॉडी का आपका वर्कआउट प्लान करोगे, वही आप नेक्स्ट डे फॉलो इट फॉर 3 days, एंड फोर्थ डे यू कैन गो फॉर द कार्डियो ट्रेनिंग। Okay. 2 days में वर्कआउट फिनिश किया जा सकता है, ठीक है, नॉट लेस देन दैट, वेरी लेस देन दैट। एंड ये जो पहले 3 दिन है, उसमें भी एक आध दिन आप कार्डियो ऐड कर सकते हो, ठीक है। Okay. सो 2 days ऑफ कार्डियो हो जाएगा आपका, एंड 3 days ऑफ वेट ट्रेनिंग हो जाएगा। सो दैट Okay. सर्व द पर्पस, एंड धीरे धीरे ऐसा प्रोग्रेशन होगा इंटरमीडिएट की टुवर्ड्स। देन यू कैन प्लान की 3 days में 1 day यू कैन टारगेट अपर बॉडी, नेक्स्ट डे लोअर बॉडी, ओके, या फिर Mhm. लोअर बॉडी के कुछ पार्ट्स आज, अपर बॉडी के कुछ पार्ट्स कल, एंड परसों बचे हुए पार्ट्स, लाइक दैट, एंड 1 day ऑफ कार्डियो। सो दिस इज हाउ यू प्लान इट। Okay. That will be a good understanding. And about your nutrition thing, of course, we do provide assistance in terms of online trainings and nutrition both. So Okay. you'll get a call back maybe tomorrow from our consultation heads, and Sure. we'll talk to you about this, and they will take the things up. Yeah. Sure. Sure. So they will help you out in every possible ways, and maybe they will help you to design your workouts, a very customized workout pattern as well. And even if you opt to go for the online training program, that is also possible. So they will Okay. guide you Perfect. regarding what can be done in that case, right? Sure. Thank Sure. you so much. And I need to drop, just wanted to say a big thank you to all of you. There were a Thank lot you of so much. things that we don't even know of. So this was a great session. So thank you, everyone. Thank you so much, Sanket. Yeah. See you. Yeah. Bye bye. Anything else? No doubts. So I think we can close it here. Any one Like, last? I'm sorry. Can Yeah. I ask one? Yeah. Of course, you can go ahead. Yeah. Okay, so I don't really go to the gym for working out, but I work out like body weight exercises. I just have some chest fat and I'm an athlete. I have 15% body fat. I just want to get rid of the chest fat. Okay, fine, understood. So, first of all, जो goal redesigning का slide हमने देखा था, I'll take you there. Okay,
Yes. because this goal needs to be designed, right? There are some spot areas कभी कभी बॉडी में जहाँ पे बॉडी फैट accumulate हो जाता है. जैसे कभी कभी फीमेल्स के केस में मैक्सिमम फैट accumulation हिप्स में होता है, लाइक मेंस के केस में स्टमक एरिया में होता है. सो देर आर रेयर केसेस कि जहाँ पे चेस्ट एरिया में भी फैट डिपोजिशन दिखता है. ठीक है, दैट इज वन थिंग. सो आपको पहली चीज तो ये देखना है कि एग्जैक्टली दैट इज अ फैट डिपोजिशन और देर इज अ साइन ऑफ some hormonal issues, because there are sometimes, like in the males, basically because of some hormonal issues, fat accumulation near chest happens, which is called as the gynecomastia condition. Okay, first you need to figure that thing out. And of course, like, let's say, consider both the aspect. If that is a gynecomastia, you need to follow a very good fitness regime inclusive of weight training and everything. That is the only option with the help of the nutrition. And if consider that is just the case of let's say body fat that has been accumulated in some certain area. So like, spot reduction is never going to happen. कि like, body fat वही से चला गया है. And even if you on a leaner note, right? बिकॉज आप लीनर भी हो, लाइक लेट्स से 15% भी बॉडी फैट कैरी कर रहे हो, तो उसमें से लेट्स से 1 और 2% वहीं पे एक्यूमुलेट हो गया है. जनरली होता नहीं, कुछ कुछ केसेस में होता है, राइट? सो उसको फिक्स करने के लिए भी आपको सेम ही मेथोडोलॉजी है. अगर आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो, बिकॉज दैट मीन्स दैट इज नॉट वर्किंग. बिकॉज उसमें तो बॉडी अडेप्ट हो गई, आपको बॉडी वेट से स्क्वाट्स कर रहे हो रोज रोज रोज, बॉडी कैन डू दैट. देर इज नो न्यू चैलेंज. न्यूट्रिशन वाइज भी आपको देखना पड़ेगा कि हाउ वेयर इट इज गोइंग. सो आपको कंप्लीट बैलेंस रखना पड़ेगा अगेन न्यूट्रिशन का, इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर macros, micros, everything, and you have to start lifting weights, because at the end of the day, weight training से ही maximum fat loss किया जा सकता है, because weight training will give you the effect called as after burn effect. So let's say if you are working out, like doing weight training for an hour, so rest 23 hours आपके बॉडी को maximum calorie utilization के ऊपर लेके जाती है weight training. So that is how it goes. So आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा. अभी जो फैक्टर्स बोले, पहले तो कैटेगराइज करो कि which level it is, and accordingly you can take the actions. Okay, but is there any alternative for weight training? Because I'm in 12th grade and then I can't go for a gym for like 6 or 7 more months. ओके, सो एक्चुअली वेट ट्रेनिंग के लिए ऑल्टरनेटिव एक ही है जो मैंने प्रीवियसली मेंशन किया. दैट इज नॉट अ ऑल्टरनेटिव, यू कैन कंसिडर दैट एज स्टेजेस. कि जैसे अगर वेट ट्रेनिंग आइडियल चीज है करने के लिए, राइट? इफ यू कैनॉट डू वेट ट्रेनिंग, यू कैन डिजाइन सम हाई इंटेंसिटी सर्किट प्रोग्राम्स at your home only, right? Because high intensity circuit programs say you can train your muscular endurance, musculoskeletal strength. You can purchase some dumbbells or resistant bands at home, maybe that will work. And uska help leke you can design the circuits. You can go and search for any HIIT programs. सो वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि आप किस लेवल में इसको इंप्रूव कर सकते हो. बट डोंट डू दिस कि आज भी 10 पुशअप्स कर रहे हो, कल भी 10 पुशअप्स कर रहे हो. सो वैसे इंटेंसिटी सेम रहता है, वर्कलोड बढ़ता नहीं है. सो यू हैव टू इंक्रीज द वर्कलोड. एंड रादर देन दैट, आई विल like seriously recommend you कि like even if you are working out at home, that is going to consume good 30, 40, 50 minutes. So Okay. it's better to add 10, 15 more minutes to go to the gym and come back from the gym. It is always good. You are spending that 20 minutes extra, but that will be worth spending, trust me. Because आपको वहां पे पूरा इक्विपमेंट का सेटअप है, वहां पे गाइडेंस है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू कैन कीप द टाइम रेस्ट्रिक्टेड. जहां पे 4 सेट करने, वहां पे 2 ही सेट करो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट स्टार्ट डूइंग दैट. सो जस्ट लाइक यू कैन फाइंड एनी नियर बाय जिम. ऐसा नहीं कि बहुत कोई फैंसी जिम चाहिए जो दूर है, वहां पे जाके वर्कआउट करना है. नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. जो भी जिम सबसे नियरेस्ट है, यू कैन जॉइन दैट. एंड मे बी यू कैन यूटिलाइज दैट फॉर द बेटरमेंट. Okay. And there's one last thing. So during my April holidays, I actually used to watch anime, and there's this character. I followed his workout routine that was running 10 kilometers a day, 500 push-ups and squats and something. I did that for like 30 days. I've lost fat all over my body, other than the just only the chest fat and the belly fat. Okay, so see, you will get a lot of fancy programs on the internet, okay, but the truth is again the same.
So only fat dropping is the goal. Let's say, like I can clearly see here, the body chest fat dropping is the only goal for you as of now. And Yeah. you, like I am considering you have dropped a few poundages before also with the help of this program as well, right? So if your body is not going beyond that, due to like any reasons, so let's say your body has like hit the plateau, so it's a plateau state. So to break the plateau, you again have to start from the scratch. Your workouts should be more progressive. That is the only solution. Your nutrition approach should be changed. Even if you're following or not, I have no understanding, but I'm just telling you, your nutrition approach should be the way that we have designed today, and your workout needs to be designed in this way. सो इवन इफ यू हिट द प्लेटू, भले आपने जो वर्कआउट डिजाइन किया था पास्ट में, आपने जो फॉलो किया था, उसके वजह से आपको उतना ही रिजल्ट आ रहा है जितने आपकी बॉडी दे सकती है। Okay. बिकॉज अभी आपके बॉडी ने उसको एडेप्टेशन दिखा दिया है कि 100 500 पुशअप्स यू कैन डू इट वेरी इजीली। अभी दैट Yes. इज नॉट लाइक नो मोर चैलेंज। एंड ऐसा नहीं होता कि मैं आपको वही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, देर इज नो स्पॉट रिडक्शन। चेस्ट का फैट जाना है करके अगर आप पुशअप्स करोगे और फैट चला गया, ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। जैसे स्टमक, लाइक स्टमक के रीजन में फैट है, यू कैन नॉट डू क्रंचेस टू वर्क ऑन द फैट लेवल्स ऑफ द स्टमक। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, एंड दिस इज द एग्जाम्पल, यू आर टेलिंग इट योर सेल्फ, दिस इज प्रूव्ड, क्योंकि आपने बहुत ट्राई किया है पुशअप्स करने का, फिर भी वो फैट नहीं जा रहा है। देन यू हैव टू ट्राई समथिंग एल्स, and that something else is all the five components of the fitness. You have to go and do cardio, weight training, everything you have to add, बिकॉज ओवरऑल बॉडी का फैट, लाइक लेट्स से अभी आपके एब्डोमेन एरिया में फैट नहीं है, ऐसा कंसिडर करते हैं, चेस्ट में फैट है, तो Okay. ऐसा नहीं होगा कि चेस्ट का ही फैट चला गया, एब्डोमेन का भी जाएगा, मे बी आपको सिक्स पैक्स आ जाए उसके बाद, राइट? एंड Yes. चेस्ट का भी फैट साइमल्टेनियसली जाएगा। देयर आर केसेस लाइक अभी किसी के केस में थाइज है, भले वो बॉडी फैट कितना भी ड्रॉप कर ले, थाइज विल ऑलवेज लुक बिगर, राइट? ऐसा भी होता है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में होता है। सो देर आर बॉयज की जहां पे जिनका बेली फैट जाते जाते जाता नहीं है, भले वो 15% बॉडी फैट कर रहे हैं कैरी, इतना सा लेयर दिखने नहीं आता है कुछ भी कर लो, बिकॉज दैट नीड्स कंसिस्टेंसी, पेशेंस। प्लेटू ब्रेक करने के लिए यू हैव टू फिक्स न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट्स एज वेल, जो आज पूरा पैटर्न समझा है। एंड इन दैट वे ओनली यू कैन first thing first, check for if that is a case of gyno or it is just the chest fat. So doctor can give you the insights on that. Is it a gyno or a problem of chest fat? Okay. Okay. If the Thank gyno is you. there, then that is completely a case of hormonal things. And again, if the hormonal things are involved, then you need a very continuous support of nutritionist, coach, and that too in a very guided form over the course of a year or so, come se kam. So uske baad that problem will be solved, or else doctor will go and directly tell you the option of surgeries in that case. So don't go for surgeries. That is our suggestion. Go with this flow. Okay. Yeah. Yeah. Thank you First, so check much. if it is there or not. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thanks. You. Yeah. Next question, we have 10 minutes left. 9. Any questions? Prachi, if any of your questions were unanswered, you can ask right now. It was answered, Madhuri Tejas, and you answered my question. Thank you so much for that. So, meanwhile, can I ask a question? So, okay, yeah, go ahead. So, sir, can you tell me something about like testosterone? How can we boost testosterone naturally? किसी Okay. का बहुत ही कम था, पहले से better हुआ है when we started vitamin D3 and all supplement and weightlifting, strength training, but still it is not crossing 300. So, like, how can we help them? Okay, so in the case of males, right? Yeah. Yeah. So in the case of males, see, because of the lifestyle, this is like high time कि बहुत बार ये cases आते हैं कि 300 testosterone रहता है, and that will not hype and all. So to be very honest, I was that case myself. Okay, so I was having gynecomastia, proper breast development. You can consider 10 years back. Okay, and I have the testosterone reports of 250 as well, and now the reports of 972. Okay, so this is like a very huge enhancement. Okay, so the first thing first, of course, fat-based diets are going to help drastically, because that is the base of any androgen. Okay, any androgen consisting of testosterone, basically, right?
So androgen hormones work on the base of the fat. So first thing first, you can try fat diets. Second thing, consistency in terms of the nutrition, foolproof supply of the supplementation, all the supplements starting from fat loss to ergogenic aids to everything, but that can happen only on the performance level of that. Okay, so performance level plus all the supply of all the supplementation, that is the key. Along with that, there are a lot of testosterone boosters that will be in the market. Don't try that, because that is not going to help you. Okay, because testosterone booster से अगर gain हो भी जाता है ना, तो that will be only 10 points, not more than that. So fitness regime for continuous 2 years is going to help you, nothing else. सब सप्लीमेंटेशन का सप्लाई जो सोनाली तुम्हें पता है वो ऐड करो, स्टार्टिंग फ्रॉम करक्यूमिन टू एवरीथिंग ऐड इट. एंड liver supplements help a lot. Fat based diets, fat based ketogenic diet you can try in that case, वो भी वर्क होता है. कार्ब बेस्ड डाइट्स भी काम करते हैं. इट इज अप टू योर लेवल्स. वर्कआउट लेवल्स मैटर्स अ लॉट, राइट. एंड वहां पे धीरे धीरे प्रोग्रेशन होगा. ओके, आई Okay. थिंक मीटिंग क्लोज हो जाएगा अभी. सो we can end it here. If anyone has any questions, you can just drop like to our team. Maybe we can consider, we can email, or we can have a separate meeting with you, and we'll try to resolve them. So thank you so much for attending. I think everyone has left already. So see you in the next session. Okay, thank you team, it was amazing. Yeah, thank you Thank so you, sir. much. Thank you, the backend team as well, Suresh, Ankit, everyone. Yeah. Bye bye. See you.